Today we are going to discuss, as we are doing the revision of the administrative law, we are going to discuss the revision and the first unit, which is consist of introduction to administrative law. What is the nature of the administrative law? What are the definition of given by various jurists of administrative law? So we are going to discuss the introductory portion related to the administrative law. So for that, I am sharing on your screen this is the first slide. What is administrative law? Administrative law है क्या? Administrative law is a byproduct of growing socio-economic function of the state and increased power of government. Administrative law जो है वो जो मौजूदा सोशियो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं स्टेट के, उनके बढ़ने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ हुई है. What is defined here? Administrative law is that branch of law which is concerned with the composition of powers, duties, rights, and liabilities of various organs of the government. Administrative law is the branch of law which is concerned with the composition of powers, duties, rights, and liabilities of various organs of the government. This is the administrative law. Talking about the history of the administrative law, although it is a very new subject which started in India from 1950 onwards, but it was there in the historical period of the Mauryas and the Guptas. Administrative law is right from the beginning, because as I told you, administrative law is of administrative law has, just a second, I think. Administrative law has can be defined in the two parts: law made by administration and law of administration. So this is slide is concerned with the history of the administrative law. Now moving forward, administrative law in modern times. How the administrative law is growing in the modern times. The rapid growth of administrative law in modern time is the direct result of the growth of administrative powers. In the modern state, it is regarded as the custodian. Recording the lecture on administrative law in modern times. The rapid growth of administrative law in modern time is the direct result of the growth of administrative power. In the modern state, is regarded as the custodian of social welfare, and consequently, I am moving with a different slide, and I am going to share these slides to you in the form of the PDF. Before that, I want to discuss this thing, that what is administrative law and why it is growing so rapidly. Administrative law, as we have discussed in the slide, administrative law is concerned with the powers, duties, liabilities of the government. It is it is related to the power, duties, and liabilities of the government. How it is growing? Because nowadays the state is not only concerned with the regulation of laws only. The state is also interfering in the commercial businesses. As you have gone through this constitution, there is
Article 299, 298, 298, 299, and 300 in regard to the power of the government to enter into a contract and all these things. इसमें समझने की बात यह है कि पहली चीज तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की वो ब्रांच है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, ये चीजें डील की जाती हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज हैं उनकी पावर्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनकी लायबिलिटीज क्या हैं, वो किस तरीके से वर्क करेंगी, क्या प्रिंसिपल अपने सामने रखेंगी, कैसे वो वर्क नहीं करेंगी, अगर कोई गलत एक्शन करती हैं, कोई गलत काम करती है तो उनके लिए जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके लिए रिलीफ क्या है, जो जैसे कि हमने रिट्स में पढ़ा. तो ये सारी चीजें कंक्लूड करके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाती है. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है. और इसको हमने कहा कि दो पोर्शन में हम बांट सकते हैं कि लॉ मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब जैसे रिट्स का पोर्शन है और नेचुरल जस्टिस का पोर्शन है, रूल अगेंस्ट बायस्ड है, रूल अगेंस्ट फेयर हियरिंग है, ये सब वो है जो बात करते हैं कि लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ कैसा चलेगा. लॉ मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन में जो अगर चीजें देखें तो मेनली कंसर्न होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो कानून बना रही हैं वो कैसा बना रही. मेनली जो कंसर्न होता है वो ये होता है कि लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हमने कई सारी चीजें पढ़ी. अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये इतना ज्यादा डेवलप क्यों कर रहा है. Why it is developing so fast? Right from the middle of the 20th century, 1950 से स्टार्ट हुआ और फिर ये रैपिडली ग्रो करता चला गया. उसकी वजह ये है कि अब स्टेट जो है यानी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं रही है, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की स्टेट नहीं रही है. अब उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, चूंकि हमने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज, तो अब उसकी राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज भी बढ़ती जा रही हैं. अब जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ कंसर्न नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, वो ये भी देख रही है कि हेल्थ के इश्यूज क्या हैं, वो ये भी देख रही है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है. इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या इस तरीके के स्टेट को हम लेजिस्फेयर स्टेट कहते हैं. लेजिस्फेयर स्टेट. और ये लेजिस्फेयर स्टेट से अब वेलफेयर स्टेट बनता जा रहा है. लेजिस्फेयर जहां पे गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स में कोई रोल नहीं होगा वो होगा लेजिस्फेयर स्टेट. और जहां गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करेगी बिजनेस में, जैसे कि मैंने बताया कि अंडर आर्टिकल 298 एंड 299, 298 gives the permission to the government to start any trade or business, and 299 deals with Article 299 deals with the government can enter into a contract. There are various other things, but main purpose of these contracts are this. So in this scenario, the administrative law is growing so rapidly that it cannot be stopped by any means. Or there are provisions of administration. Administration में होता क्या क्या है? It make policies, it provides leadership to the legislature, it executes and administers law, it takes manifold decisions, it exercises today not only the traditional function of administration but other varied types of function as well. Now, object of the administrative law. The goal of administrative law is to redress this inequality, to ensure that so far as people, the individual and the state are placed on a plane of equality before the bar of justice. जो equality before law का concept है कि everybody is equal before the law is the object of the administrative law. ये जो concept है equality before law का, ये एक तरीके से administrative law का object है, इसका purpose है. Definition में Austin has given a definition as the law which determines the ends and modes to which sovereign power shall be exercised. In his view, the sovereign power shall be exercised either directly by monarch or directly by the subordinate political superior to whom portions of those delegated committed in trust. The thing is that what we have discussed that what is the object of the administrative law.